Folks, we have witnessed the talents. We have seen their style and charisma on the ramp. Now it's time to test their wit and wisdom. Welcome to the final round of Mr. and Miss Freshers Vivanta 2K24, the question answer round. In this round, our contestants will face a series of questions that will challenge their knowledge, thinking, and creativity. Who will answer with clarity and confidence? Who will stumble? The suspense is building. Our judges are ready with their questions, and our contestants are ready to give it all. Let's see who will emerge victorious and take home the coveted titles of Mr. and Miss Freshers Vivanta 2K24. Let's begin the question answer round. Get ready to be praised and let's crown our winners. Now I would like to hand over the mics to the judges. Audience, yeah. It's epitome of perfection, and I think today we all have witnessed the very, very perfect performances. So 3 cheers for all these contestants. ये जब मुझे इनविटेशन देने आए थे तभी मैंने बोला था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि सभी इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, पर जो कि ये कंपटीशन है तो हमें थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है, 19-20 होता है, तो कोई भी नाराज़ ना हो, आप सब बहुत बहुत अच्छे बच्चे हो. थोड़ा सा रिवीजन मैं कर लूँ. पहले आए थे आर्यन मुराडिया, करेक्ट. यूपी के भैया जी, कोई स्पोर्ट्स बचा है जो आप खेलते नहीं हो? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया आपने. नंतर आली दीपाक्षी, मूर्ती लहानपण कीर्ती महान. खूप गोड आवाज बेटा तुझा. माथुर जी, आपने मथुरा के कान्हा का बहुत अच्छा दर्शन दिया. अद्विता, वेवेशियस, खूप हुशार आणि उत्साही, खूप छान डान्स परफॉर्मन्स केला. फिर आया डीपली पैशनेट आयुष मुळे. बेटा दौड़ना और उड़ना बहुत पसंद है, पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए तो रुकना पड़ा. लाइफ इज़ लाइक दैट. बहुत अच्छा बजाते हो आप गिटार. फिर आई पंजाब की कुड़ी, चुलबुली, स्फूर्तिली, बट उतनी ही भावुक, है ना. बहुत टचिंग परफॉर्मेंस दिया आपने बेटा. अवनीत कौर, थैंक यू. बाद में आए हर्ष जी, ऑसम डांस करते हो आप. फिर आई सुरीली बट उतनी ही कॉन्फिडेंट कामिनी. विध्वंसाचा मेसेज खूप खूप इम्प्रेसिव्ह दिला विश्वास. मल्टिपल पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर प्रेझेंट केली सानिका, पण तू स्वतः मल्टी टॅलेंटेड क्वालिटी पर्सन आहेस. फिर आया वृषभ, वेरी नाइस रैप सॉन्ग. फिर आई तनुश्री, आई थिंक वर्सेटाइल. धुळ्याचा रेझोनंट मुलगा आकाश. आई बाबांनी चांगलं केलं ना, जबरदस्ती केली शिकायला. येस. आणि मग शेवटी आली जूही. जूही बेटा, इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस. तो आप सब ने हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एंटरटेन किया है, अच्छे मैसेजेस दिए हैं, पर जैसे मैंने बोला कि कुछ होता है 19-20, तो हमें माफ़ कर दीजिए. अब आपके पहले 3 मिस्टर फ्रेशर और पहले 3 मिस फ्रेशर्स, उनको हम बुलाएंगे और बाद में आपका क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे. तो मैडम को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उन तीनों 6 कंटेंटर्स उनको बुलाएंगे. एमजीएम में बहुत टैलेंट है बॉस.
It was such a difficult task for us to choose these 6 stars from MGM. So today the first 6 contestant for the final rounds are, first is Kamini. आप आगे आ जाओ बेटा. Second हमारे कृष्ण मुरलीधर आरव. फिर आते हैं हमारी मल्टी टैलेंटेड तनुश्री. हमारे बादशाह वृषभ. फिर आते हैं जूही. और लास्ट में हर्ष. तो रेडी है? Let's begin with the final round then. Are you guys ready? हर्ष ने माइक लिया है, शायद उसको गड़बड़ हो गई है. नहीं नहीं नहीं, ले लो, कोई बात नहीं. पूछिए मैडम. So my question to you is, if you had to select between unlimited money and unlimited fame, what would you choose? And why? म्हणजे पैसा हवा का प्रसिद्धी हवी असं विचारतायत. का दोन्ही? I would go with unlimited money, as with unlimited money comes unlimited fame. When you have money, you can buy anything you want, and which brings fame with it. So I would choose unlimited money. अच्छा, तो आपका कहना है अनलिमिटेड मनी से आप अनलिमिटेड फेम बाय कर सकते हो. Yes, ma'am. अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, whom you believe, गॉड और कर्मा, प्रयत्न का नशीब. तुला नशिबाने पैसा मिळेल का प्रयत्नाने मिळेल? I believe in God. यू बिलीव इन गॉड. Yes, ma'am. Okay. Thank you, beta. But just one point to say that unlimited fame is not related with unlimited money, what you say. महात्मा गांधी जी, कुछ पैसा नहीं था पर फेम कितना मिला? अनलिमिटेड. सो प्रयत्नाने मिळतं. गुड. गर्ल्स तो आपने एक बहुत सेंसिटिव परफॉर्मेंस दिया था हमारे लिए. Yes, ma'am. तो what does feminism mean to you? To me, feminism doesn't just mean about equality amongst women and men. It, for me, truly means a woman rising towards her freedom and finally breaking free from the chains that society has put on her, and really just being able to freely express herself, which I got the opportunity to do today via my painting. And for me, that is true feminism, to express freely and to live freely. Very good. If you get a power of magic to change one thing from the society, what you want to change? I feel like in today's society, the most important thing that we as humans need to change is mindset. The judgmentality that we carry with us has truly become so toxic and harmful to our fellow human beings. And I truly believe that is something that should be changed. And if I did have the power of magic and I could change one thing in our society, it would be to try and inculcate a better and a more positive mindset towards various castes and creeds in the society. Very good. Thank Nice. you, ma'am. हाय आरव. तो आपने हमारे लिए तो बहुत मस्त रासलीला रचाई थी यहाँ पे. तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, हु विल यू मैरी, टू द पर्सन हु लव्स यू और टू द पर्सन whom you love the most? First of all, I would like to thank everyone for supporting me, and I would like to thank the judges for choosing me.
I would. Being loved is the best feeling in the world for me. Very good. And throughout my childhood, I felt that from my parents' love to, growing up with your friends who are your second family. It's the best feeling you can have. So I would not say ki me liking someone, me loving someone, or I would like to choose a middle ground in this. Yeah. I know it's a bit of a borderline types answer, but बहुत डिप्लोमेटिक हो रहे हो. वो कृष्ण है ना. आपने कृष्ण किया था. कृष्ण की एक सीख हमें बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती है. one thing about Shri Krishna is ki he always talked about karma. It always came back to you. It always comes back to you. Very good. Good evening, judges. Thank you for this opportunity. Thank you. हाय तनुश्री. तो आपने बोला था कि MBBS में एडमिशन मिल जाएगा तो पापा IAS भी दिला देंगे, है ना? तो if you have a choice between who would you get to marry, तो आप किससे चुनेंगे? एक IAS ऑफिसर, एक या फिर एक फेमस पर्सनालिटी, एक्टर या क्रिकेटर? Ma'am, I would marry whoever cares for me, who respects me and who is kind to me. Wow. Who respects my parents and who understands my love for my family. I would marry that person. Thank you. वेरी गुड. तनुश्री, अभी आज का एरा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो कैन यू थिंक दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस गुरुज और टीचर्स? Never, because it is never going to have a personal touch that we feel with our professors. They're never going to counsel you properly. You can ask ChatGPT to motivate you, but it is never anything as good as just before your final exam you go to sir and you say, sir, nahi ban raha, kya kar rahe hain? And he's like, पूरे साल पढ़ा है, तुम कर लोगे. That motivation cannot beat any YouTube video, any Sandeep Maheshwari video, anything. Very good. So it is the difference of knowledge and understanding. Yes, the emotions are very important. Very good. Thank you, ma'am. Thank you. MGM के बादशाह. So if you get to spend a day with your favorite hip hop artist, who would it be and who would he or she be, and what would you do with the whole day? It would be Krishna. Because he's doing lyrical rap since 2008 and he's most consistent, and I love his dedication towards the music, towards the culture, hip hop. Thank you, ma'am. ऋषभ, तू म्हणाला होतास की आजोबांच्या आशीर्वादाने मी इथे आलो आहे. सो व्हॉट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ ओल्ड पीपल इन टुडेज सोसायटी? I don't know about today's society, but माझ्या आजोबांचं मला खूप इम्पॉर्टन्स होतं आणि माझ्या आजोबांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मी इथे आलेलो आहे. आणि आजोबा तर नाहीत माझे, पण आजोबांना आता माझ्यावर गर्व झालेला असतं की माझा नातू डॉक्टर होतो आहे. असं खरं तर माझ्या आजोबांचं स्वप्न होतं की मी इथे येऊ. थँक्यू मॅम. थँक्यू. Good evening, judges. हाय कामिनी. Hello. आपने अपने इंट्रो में बोला था कि यू वुड ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट. Yeah. तो हाउ डू यू हैंडल योर फेलियर्स? According to me, failures are the best teachers. So whenever you fail, you get to learn a new thing. So it's all about your perspective and how you take the failure. For me, for a quieter time, I might feel sad, but I always try to learn something. What did go wrong, or where was I wrong? And I just learn from it and I just move on. I just want to learn from my failures. So you believe in perfection. So extend to the same point. So what is important for perfectionist? To think with brain or heart? I think it is situational. At times you have to use your brain, and at times emotions are important. So it completely depends on what situation you're in or what surrounding you're in. So yeah, that's my answer.
Yeah, so it's a thinking with feelings and feelings with thinking. Yes, something like that. Good. Thank you so much. Thank you all contestants. Thank you.